Look at these pictures first. This is some severe acne. I remember that ये phase मेरा life का सबसे बुरा phase था. Waking up every day with a city mental health and a lots of acne. And even worst case, I used to get new acne every other day. And मेरे को अभी तक याद है that sometimes the new acne used to be so big that मेरा आँख, मेरा lips या बोलूँ मेरा ये area फुल जाता था. I'll leave some photos so you can like actually see how severe that acne was. And at this point मेरा डाइट बहुत सही था. I was also working out, but despite being on a clean diet and exercising daily, I had a lot of acne. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था. I was underconfident. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था that मेरे face पे इतने सारे acne. Because like just imagine you are doing everything right, like you are eating good food or something like an English breakfast, and also you are training every day, like you are going out for a walk, you are doing cardio, and you're also doing all of these good self improvement habits. And even ये सब चीज करने के बाद I had all these fucking acnes and I was at rock bottom, man. But at the start of 2026, I told myself that fuck you, man. I'm going to start from the basic in terms of everything. हर एक चीज में I'm going to start from the basics. And जो चीज मुझे लग रहा है जो least important है, साला अब तो वहीं से start करना है, उसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना है. आई विल फोकस ऑन द बेसिक्स. And this is the progress I have made in my journey towards getting rid of all the acnes. And this is some of my recent pictures. I've lowered all my acnes in just 3 से 4 महीने में. मैंने अपना सारा का सारा acne fix कर दिया. I fixed my hair, all of this thing in a natural way. I didn't had a dermatologist to guide me. I did all of these things all by myself. और ये वीडियो में मैं ब्रेक डाउन करूँगा that how I eliminated all my acnes. मैंने अपना सारा acne कम कैसे किया. And at the age of 19 or say, yeah, I turned 20. So at the age of 20, how I grew a subtle beard. And also, how am I going to continue to improve my facial masculine beauty. But in a healthy way, and also by not compromising my mental health, and at the same time building a nice aesthetic physique with a lot of chest hair, by the way. With anyways, step number 1, it's that fucking tap water which is ruining your skin. अब मोस्ट ऑफ तुम ये इस चीज़ से रिलेट कर पाओगे ना दैट जब हम हमारे होम टाउन में होते हैं देन वी विल सी दैट हमारा स्किन बहुत ग्लो कर रहा है. वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एक्ने और अनइवननेस इन आवर स्किन, ठीक है. बट वंस वी शिफ्ट इन ए न्यू प्लेस और से न्यू सिटी, कुछ दिन के बाद ही या कुछ दिन के बाद ही या 2-3 दिन के बाद ही हमें एक्ने आना चालू हो जाता है. मतलब हमारा हेयर ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है, बाल झड़ना स्टार्ट हो जाता है कुछ लोगों को. और फिर तुम अगर वापस तुम्हारे होम टाउन आओगे तो तुम्हें ये चीज़ जानकर शौक होगा दैट जो पानी तुम्हारे होम टाउन का पानी जो तुम्हें पहले सूट करता था, तो जो तुम्हारे स्किन पे सूट करता था, जो तुम्हारे हेयर्स पे सूट करता था, वो अब तुम्हारे ऊपर सूट नहीं कर रहा है. वो अब तुम्हारे ऊपर सूट नहीं कर रहा है. एंड इवन वर्स केस ये तुम्हारे एक्ने को और बढ़ा रहा है. और ऐसा इसलिए होता है ना बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस द वाटर इज सो हार्श फॉर द स्किन टाइप और इवन हमारे बाल के लिए भी और हमारे बालों के लिए भी इतना हार्श, वो पानी इतना हार्ड है, इतना हार्श है दैट वो हमारे स्किन को डैमेज कर रहा है, हमारे बालों को डैमेज कर रहा है. और इसके ऊपर अगर तुम मेडिसिन या कोई क्रीम्स या कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करोगे ये सोच कर कि वो एक्ने को कम करेगा, तो ये उल्टा ही काम करता है और वो एक्ने को और बढ़ाता है. इट backfires दैट प्रोसेस. एंड मैं कोई टाइप का डर्माटोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बट वॉट एवर आई एम लाइक शेयरिंग विथ यू राइट नाउ इज कम्प्लीटली बेस्ड अपन एक्सपीरियंस एंड दिस इज वॉट आई हैव सीन इन माई सेल्फ एंड इन अदर पीपल अराउंड मी दैट दिस इज समथिंग और लेट्स से दिस इज द फकिंग प्राइमरी कॉज ऑफ एक्ने. जस्ट इमेजिन यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट, यू आर ईटिंग गुड फूड, तुम जिम जा रहे हो, तुम सब चीज़ अच्छे कर रहे हो, यू आर कम्प्लीटली सोबर, ओके, यू आर कम्प्लीटली सोबर, यू डोंट ड्रिंक, यू डोंट स्मोक, यू डोंट डू एनी काइंड ऑफ बैड हैबिट्स, बट स्टिल यू हैव एक्ट. जस्ट इमेजिन हाउ बैड इट वुड मेक यू फील. तुम कुछ भी बुरे चीज़ें नहीं कर रहे हो बट स्टिल यू आर गेटिंग एक्नेस. इट इज दैट वेरी टैप वाटर दैट इज ruining योर स्किन एंड योर हेयर. ऑल ऑफ दीज थिंग्स दीज डेज, जो भी चीज़ हम खाते हैं पीते हैं, हर चीज़ में दे आर ऑल फिल्ड विथ टॉक्सिक chemicals and especially for males, man, they are lowering your testosterone, lowering your like they're fucking up your endocrine system and basically तुम्हारा body खराब कर रहा है वो चीज़.
It is lowering our testosterone levels. It is fucking up our endocrine system and everything else. Anyways, ये किसी और दिन के लिए या किसी और वीडियो का टॉपिक होगा, बट फॉर नाउ मैं ये बोल रहा हूँ दैट देर आर ओनली टू थिंग्स we need to do to fix this entire thing. Just two simple things, man. Just two fucking. Okay, wait. There are only two things you need to do to fix this entire thing. First, सबसे पहले remove all, like, just not even remove, completely eliminate using tap water on your face. Tap water use करना बंद ही कर दो. Completely stop it. Don't even use it. Start washing your face with AquaGuard water, like RO water. And even like अगर तुम्हारे parents मना कर रहे हैं, most of your parents will like not allow you to wash your face with AquaGuard water. If you even make them watch this video, they might like allow you to wash your face with AquaGuard water because of the seriousness of this topic of you getting a lot of fucking acnes in an age where you are not like supposed to get acne. हाँ hormonal balance imbalance होता है और तुम्हें acne आएगा, बट एक पॉइंट के बाद वो हार्मोनल इम्बैलेंस रुक जाता है. ओके, अब प्यूबर्टी में हाँ चलो एक्ने आता है, ठीक है, बट आफ्टर ए वाइल 20, 21, 22, 23, लाइक इसमें किसको एक्ने आता है भाई? And even like मेरा, I'm 20 years old, when I stopped like using tap water, you can see my face, man. I don't get any acne whatsoever. So मैं ये बोल रहा हूँ that even if your parents are not allowing you to wash your face with, because they will not allow you basically. If your parents are not allowing you, अगर तुम्हें वो अलाउ नहीं कर रहे हैं अपना फेस एक्वागार्ड वाटर से धोने के लिए, then okay, because you wash your face fucking 10 times a day, man. So it's okay. Anyways, just suck it up and like tell them that okay, I'm going to wash my face once a day, like once per day, but I'll use AquaGuard water. And just do this fucking thing for like 3 to 4 months, 5 months, because ये चीज़ काम करता है यार. And when I say this, there will be a kid in the comment section who will be like, oh, अगर ये सबके लिए काम करेगा, सबके लिए काम करा है, तुम्हारे लिए काम करा है, मतलब राजवीर तुम्हारे लिए काम किया, बहुत लोगों के लिए काम किया, ठीक है, बट इसका क्या गारंटी है दैट ये मेरे ऊपर भी काम करेगा? इट वोंट वर्क ऑन मी. ये मेरे ऊपर काम नहीं करेगा, मेरा अलग स्किन टाइप है. आई एम लाइक उसका रिस्पॉन्स में ऐसा ही दूंगा ना दैट stop bullshitting you, man. Stop complaining. First of all, go and try it. You haven't even tried it yet और तुम बोल रहे हो that it won't work for you. First go and try it like for 3 to 4 months religiously, not like half-assing it कि मैं 1-2 दिन धो लिया उसके बाद वापस मैं टैप वाटर पे स्विच कर लूँगा. ये एक बार आर ओ से धो रहा हूँ मुँह अपना और दूसरी बार टैप वाटर से लगा है, नहीं, वैसा नहीं. For like 3 to 4 months, even 5 to 6 months at least, just wash your face with AquaGuard water. Just wash your face with AquaGuard water. You'll see a difference, man, in your physique. In your face. You've not even tried it and तुम बोल रहे हो that it won't work. That's the absolute reason why when you don't listen to someone who has been through that and is telling you why you need to do this in order to improve yourself, that's why when you listen to your own brain, like you have listened to your own brain, and now just look around, just देखो तुम कहाँ पर end up हो गए हो, तुम कहाँ पर आ चुके हो. You have listened to your own brain, and now you need to watch a video, like a fucking YouTube video on how you can fix your skin, how you can fix your acne, how can you reduce acne. You're telling yourself that you need to grind on your looks. You need to get better, you need to look better. Then this is your grind, man. Do this, like just wash your face first wash your face
with AquaGuard water. Second, wash it consistently. Wash your face consistently. Yeah, of course, use a cleanser, but wash your face consistently with a cleanser or a face wash by AquaGuard water, like RO water, for 6 to 5 months. Basically, तुम्हें बस इतना ही करना है यार. And just do it for 5 to 6 months, then come back. And then you'll tell me that, bro, I haven't even, like, मैंने इसको try नहीं किया था. This works, man. Like, because I guarantee you, man, this works. I'm going to guarantee you, I'm going to bet my life on this. That this works, man. This absolutely works. Because I have been through it. And one day when my sister asked me, like, how did you get rid of all of your acne? And I was like, should I help you? I'm like, yeah, you can. Like, I'm going to tell you, are you going to follow? I told her that, I'm going to tell you, but are you going to follow? She was like, yeah, fuck yeah, I'm going to. And I was like, okay, just wash your face, and just wash your face with AquaGuard water, completely ditch tap water. And for you guys, just listen this, don't get me wrong here. If you're washing your face with AquaGuard water and you're washing your hair, like your fucking hair, with tap water, you're not going to get rid of your acne, because तुम्हारा सर में जो तुम पानी डालते हो, कैसे भी ना कैसे करके तुम्हारे फेस के पास आएगा ही. ऐसे करके कैसे भी करके तुम्हारे फेस के पास आएगा, और वो और चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करता है. सो इफ़ यू हैव ए लॉन्ग हेयर लाइक मी, देन वॉश इट वंस पर डे, with like AquaGuard water. And even you are going to be amazed that जब तुम अपने बालों को सही पानी दोगे ना, then like सही पानी से धोगे, then you'll see that how good the texture of you'll notice the texture, like you'll notice a change in the texture of your hair. And that's it, man. That's it for today's video, bro. I'm not going to make this video too long. You just need to follow these two things, man. Wash your hair plus your face. Because if you wash your face with like tap water, then you are going to get a lot of acne. Even if you use 100 different like products, फिर भी तुम्हें acne आएगा. But if you wash it with AquaGuard water, RO water, then वो धीरे धीरे कम होने लगेगा. 4 से 5 महीने में पूरा कम हो जाएगा. But make sure that तुम अपने बालों को भी same AquaGuard water से धो रहे हो. And just do it for 5 to 6 months, man. And you will notice a difference in your hair and also your face. That's it, man. I don't have anything else to say. Just go and do it. Just go and apply this in your real life, man. And if this shit really helped you, then share it with your family members, or whoever who needs to watch this kind of videos. Because this is not just a YouTube video, man. This is a fucking revolution, a fucking movement against all these modern addictions, modern companies, these big corporations, which has fucked up both our mental and physical health, both young men and women these days. Thanks for watching, buddy.